Hello students, welcome to mathematics class. So in our previous class we learned about the division method and we also learned about the how to make a non-perfect square number to a perfect square number by using division method, isn't it? हमने उसमें सब्ट्रैक्शन किया था, कुछ नंबर्स में ऐड किया था, तो एडिंग और सब्ट्रैक्शन करके हमने ये फाइंड किया था, हमने ये पता करा था कि दैट वी कैन कन्वर्ट अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर by to a perfect square number, okay, by using division method. Okay, so now we will start with our new topic, estimating the square root. Okay, so suppose I have a number and you want to find the square root of that number. Okay, we are just using the estimation. Okay, हम estimation यूज़ कर रहे हैं, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बताना है, ठीक है. एस्टिमेशन मीन्स ये होता है कि आपको उसके आसपास की वैल्यू बताना है, ठीक है. जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आपको अगर कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, आपने 6th क्लास में एस्टिमेशन पढ़ा होगा, ठीक है. अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो जैसे हमने लिखा 18, 23, 14 एंड 62 इफ़ यू वांट टू ऐड दिस नंबर. ओके, तो एस्टिमेशन में क्या होता है, आप इनको राउंड फिगर में लिखते हो. राउंड फिगर में इसको आप लिखोगे 18 को 20, 23 को लिखोगे 20, 14 को लिखोगे 10 एंड 62 को लिखोगे 60. Okay, so this is the estimation and then you perform the sum, so you will get 1110, isn't it? Okay, so this is the estimation, and if you perform the sum of this original number, what you get here is you will get 7 here and 1 1. Okay, so you see it is very nearer to this number. 117 is very nearer to this number. Okay, so that's why we use the estimation. Okay, तो estimation हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम उसके आसपास की वैल्यू फाइंड कर सके विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन और विदाउट एक्चुअल एडिशन और सब्ट्रैक्शन. ओके, so now we will find the square root by estimation. Okay, so let us suppose the square root first number. Square root of, you know, the 10 square is equals to 100, 11 square equals to 121, then you will have 12 square, next number is 12, so you will get 444, next is 13, 169, and we will go to 14. Okay, suppose if you don't remember, you only know the squares up to 14. Okay, तो अब आपके पास में क्या है कि आप 100 से लेके 196 के बीच में जो भी नंबर आपके पास में आएंगे तो आप बोल सकते हो कि ये इस नंबर इस नंबर के स्क्वायर के नियर है, ठीक है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. ओके, इफ़ आई से द स्क्वायर रूट ऑफ 150. ओके, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 150, तो आप क्या करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? सो फर्स्ट यू विल से दैट सर इट इज़ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज़ वाई वी कैन नॉट फाइंड दिस find the square root of this number. Okay, then I will say okay, मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, इसलिए हमें ना इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, बट वी कैन एस्टिमेट, इजंट इट. जैसे हमने यहाँ पे एस्टिमेशन यूज़ किया, हम यहाँ पे भी एस्टिमेशन यूज़ कर सकते, दैट बाय एस्टिमेशन यूज़ करके कि ये किस नंबर के स्क्वायर के नियर होगा ये नंबर. ओके, सो व्हाट यू डू हियर इज you will write the number nearer to perfect square number nearer to this number. Okay, तो perfect square number सबसे पास हमारे पास कौन कौन से हैं? 100 है, 121 है, 145, 169 and 196. Okay, so first we will write a number nearer to this number. Okay, so which number is nearer? तो 150 के नियर आप देखोगे तो 144 है, 169 है. So we will write first here is the number which is nearer to 150 is 144 is smaller than 150 and 150 is smaller to 169. ओके, उसके बाद के हम डिजिट देखेंगे नहीं, उसके बाद के हम जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको नहीं देखेंगे, सिर्फ हम दो आसपास की वैल्यू देखेंगे. ओके, सो इफ़ यू सी नाउ इफ़ आई टेक द स्क्वायर रूट इन दिस इक्वेशन. ओके, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या बचेगा हमारे पास में? We will get square root of 144 smaller than square root of 150 smaller than square root of 169. Okay, so you know the square root of 144, that is 12, and square root of 150 you don't know, so that will remain as it is, and square root of 169 you know, that is 13. Okay, so you see इससे हमको ये पता चल जाएगा that in this we can tell that the square root of 150 will be between
12 एंड 13. ओके, सिर्फ हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं, डेसिमल्स की बात नहीं कर रहे हैं. ओके, होल नंबर्स मीन्स जो भी नंबर है विदाउट डेसिमल्स. ओके, ओनली नंबर्स विच वी आर टॉकिंग हियर इज without decimal numbers, that is whole numbers. Okay, so that is why I am writing the whole numbers only, that the square root of 150 will be in between some number, will be some number between 12 and 13. Okay, it is the actual number. तो इसका जो एक्चुअल स्क्वायर रूट जो होगा वो इसका 12 और 13 के बीच में होगा. बट इफ़ यू वांट टू फाइंड द एस्टिमेशन, तो हमने यहाँ पे एस्टिमेशन करा है. नाउ इफ़ यू वर आस्क्ड दैट फाइंड द वैल्यू, ओके, नियरेस्ट वैल्यू आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो 150 कैसे करेंगे? ओके, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनका डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों स्मॉलर देन का और ग्रेटर देन का डिफरेंस देखेंगे. तो स्मॉलर देन के डिफरेंस आप देखोगे तो आपके पास डिफरेंस दिखेगा 6. ओके, और ग्रेटर वाले का डिफरेंस देखोगे तो आपके पास में दिखेगा 19. ओके, देन यू कैन ईजीली टेल विच वन इज़ नियरेस्ट, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस कम है इसलिए ये नियरर होगा, इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा है इसलिए ये नियरर नहीं होगा. ओके, सो वी टेक द नियरेस्ट वैल्यू. ओके, सो नियरेस्ट वैल्यू इज़ 144, दैट इज़ द square root will be equals to 12. Okay, so then therefore we will say that therefore square root of 150 will be equals to 12. Okay, but it cannot be equal, क्योंकि इक्वल होगा तो वो 144 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 144 होता है 12 के इक्वल, isn't it? 12 थोड़ा ना होता है. सो वी विल राइट अ सिम्बॉल हियर. ओके, ये कुछ इस तरह सिम्बॉल है, ऐसा है, थोड़ा आड़ा टेढ़ा होता है. इक्वल क्या होता है? इक्वल साइन ऐसा होता है. अब इक्वल साइन थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो गया, आड़ा टेढ़ा, ये इसको बोलते हैं हम अप्रॉक्सीमेशन. ओके, अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं हम? अप्रॉक्सीमेटली. ओके, इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली, कि अप्रॉक्सीमेटली इसके नियरर होगा. ओके, बिकॉज इट कैन नॉट बी इक्वल्स, दैट्स वाई इट इज़ नियरर टू. ठीक है, इसको हम बोलते दैट इज़ द एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट. ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल. नाउ इफ यू आर आस्क्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 175, ओके, नियरेस्ट वैल्यू, यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू. तो नियरेस्ट होल नंबर. ओके, नियरेस्ट होल नंबर की बात कर रहे हैं. नियरेस्ट होल नंबर स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है 175 का स्क्वायर रूट ऑफ. तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर 175 के पास में कौन सा है? 169 है. फिर आता है 175, इसकी ग्रेटर बाद, उसके बाद में आता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर 169 के बाद में 196. ओके, सो 196. ओके, सो if you take the square root, okay, before taking square root, now take the difference. Okay, if you take the difference here, you will find it has a difference of 6, isn't it? 175 minus 169 is 6, and if you take the difference here, you will get 11 or 21, sorry. Okay, so you can easily say that 169 is nearer to 175. Okay, when you take the square root of this equation, you will get like something like this. Okay, now the square root of 169 is 13, square root of 175 will be written as it is, and square root of 196 is 14. So from the estimation we can say that therefore the square root of 175 will be between 13 and 14. Okay, but 175 is nearer to 169 because it has the smallest difference. So we can say that square root of 175 is approximately equals to 13. Okay, let us take another example. Now take example of 240. Okay, so perfect square number near 240 is, one is 225 and another is, which is greater than 240, is 256. Okay, so if you take the difference, you will get 15 here and you will get 16 here. Okay, so it is very close, isn't it? But you take only the smallest difference as the nearer number. Okay, तो जो smaller difference होगा उसी को आप near number लोगे, तो 225 will be nearest number. So if we take the square root on both on this equation, what you get here is, okay,
तो 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, 256 का होता है 16. ओके, सो therefore the number which will be nearest to 240, square root of 240 will be, sorry, it should not be equal, it should be, okay, let me write again. Therefore square root of 240 should be not equal, okay, it is approximately equals to 50. Okay, so that is the estimation of the square root. That is how we estimate the square root, okay, to the non perfect number. Okay, non perfect square number, non perfect square number का ही estimation यूज़ करेंगे, बाकी का तो आपको याद रखना पड़ेगा. Okay, so now we will move to the next topic. Okay, so the next topic you have is the square root of non perfect number. Square root of non perfect square number. Okay, ऐसे ही आप भी बोलते हो सबकी सब, isn't it? ओके, सो जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. यस, there exists the square root of non-perfect number. Okay, so all numbers have the square root. Okay, whether it is a perfect square number, whether it is a non-perfect square number. Okay, so now we will learn how to find the square root of a non-perfect square number. Okay, so in previous example, in previous class, we find the square root of decimal number. Okay, उसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था 150 पॉइंट समथिंग. ओके, नाउ एक मिनट. ओके, सो इस 150 से मेरे को ये याद आया कि इसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको एक जो स्क्वायर रूट फाइंड करना बताया था. ओके, दैट इज़ दिस वन, डेसिमल नंबर्स का 150.3076 में. यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी. मिस्टेक ये हो गई थी कि 24 यहाँ पे मैं लिखा था और 2 यहाँ पे लिखा था. तो 2 और 2 को मैं ऐड करूँगा तो मुझको क्या मिलेगा, 2 + 2 इज़ 4, नॉट इक्वल्स टू 6. ओके, तो यहाँ पे 4 आएगा. ठीक है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना. ओके, सो ये आप ही के क्लास के बच्चा है, उन्होंने मेरे को बताया है. ओके, सो प्लीज़ करेक्ट दिस. ओके, नाउ बैक टू आवर क्वेश्चन, बैक टू आवर टॉपिक. सो अभी आपने देखा जो हमने डेसिमल नंबर था लास्ट क्लास में 150.3076 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था. ओके, इट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, दैट इज़ वाई वी गेट द रिमाइंडर 0. ओके, सो वी विल फाइंड नाउ द स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, तो 150 का हम से स्टार्ट करेंगे. ओके, तो सबसे पहले मैं एक एस्टिमेशन हम यूज़ करते हैं यहाँ पे. 150 का एस्टिमेशन क्या होगा, जैसा कि अभी हमने देखा 150 का एस्टिमेशन होगा कि वो जो स्क्वायर रूट होगा वो 12 और 13 के बीच में आएगा, और उसके बाद में हमने कहा था कि अप्रॉक्सीमेटली 12 के इक्वल होगा. ओके, सो ऑफकोर्स स्क्वायर रूट ऑफ 150 विल बी नियरली इक्वल्स टू समथिंग 12. ओके, नाउ यू विल फाइंड आउट हाउ इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 12. ओके, सो फर्स्ट व्हाट वी डू is we make a pair. तो 150, तो 50 is a one pair and 1 is unpaired. Okay, then we will use the division method here. So first of all 1 1 1, तो 1 यहाँ पे. then the next pair is 50, 1 + 1 is 2. then you will write here 2 2 44. okay, यहाँ तक तो आप सबको आता है 24. okay, now what you have here is you have a new dividend is 6 and new divisor will be 3-digit number. okay, so 3-digit number is just greater than the dividend here. okay, so you cannot perform the division here. okay, तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हैं, सिंपल से अगर आप डिवीज़न भी यूज़ करते हो, जैसे कि 18 को अगर आप 5 से डिवाइड करते हो. ओके, मैं स्मॉलर नंबर यूज़ करता हूँ. ओके, ताकि आपको भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो. सो यू फाइंड 5 3 is 15 and you get 3 here. okay, so the dividend or the remainder is smaller than the divisor, so you cannot perform the division here, but you can perform the division if you have a number here. okay, so if you
एड अ पॉइंट है, ओके, डेसिमल जिसको हम बोलते हैं, डेसिमल लगा लोगे तो आप उसके बाद में कितने भी ज़ीरो लिख सकते हो, ओके। ऐसे ही हम बोलते हैं डेसिमल लगाने के बाद में जितने ज़ीरो लिखना चाहो तो लिख लो। तो यहाँ पे फिर हम 6 यूज़ करेंगे, 6 5 30 एंड यू विल गेट द रिमाइंडर 0, ओके। हम 0 को तब तक उसके आगे ऐड कर सकते हैं जब तक आपके पास में रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है, ओके। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ यूजिंग डेसिमल पॉइंट, ओके। सिमिलरली यहाँ पे भी हम यही करेंगे। नाउ यू गेट द डिविडेंड और रिमाइंडर इज़ लेस देन द डिवाइज़र, सो यू कैन यूज़ अ डेसिमल हियर, ओके। हमने डेसिमल लगा दिया 12 के बाद में, तो जैसे डेसिमल लगाए तो आप क्या कर सकते हैं, ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ करा। बट यहाँ पे ज़ीरो यूज़ करने की एक नया रूल आ गया, ओके। रूल क्या है कि आप जो ज़ीरो यूज़ करोगे वो हमेशा पेयर्स में होंगे, ओके। सो यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ ज़ीरो बट दैट विल बी ऑलवेज इन that will always comes in the pair, okay. So I am writing just 3 pairs of 0, okay, because I introduce a decimal here, okay. You can also introduce decimal here, okay. तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, ओके। सो यहाँ पे डेसिमल आ गया, इसलिए डेसिमल यहाँ पे भी आ गया। नाउ व्हाट यू विल डू हियर इज यू विल ब्रिंग डाउन द पेयर। सो आपने पेयर ले लिया, सो नाउ यू कैन डिवाइड इट, सो यू विल टू हियर यूज टू हियर, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 484, सो 116, ओके 116 मिलेगा। यहाँ पे अपनी कौन सी वैल्यू यूज़ की है, तो 2 यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज अगेन यू ब्रिंग डाउन दिस पेयर, so you will add this 2 4 4, okay. Okay, now you can use 4, okay, because I know 4 may I have performed the multiplication, that's why I know. So you will get 9 7 7 6, okay. When you perform this you will get 1 8 2 4, okay. Now you can also bring down this 0 and perform this division as continue, okay. ये कब तक करोगे आप, क्योंकि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, ओके, बिकॉज दिस इज़ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आप स्क्वायर रूट ले सकते हो, बट आपको हमेशा उसको डिवीज़न में कभी रिमाइंडर 0 नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इसलिए एक लिमिट होती है, ओके। लिमिट क्या है, दैट इन द क्वेश्चन यू विल ऑलवेज आस्क टू फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अप टू विच यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट, ओके। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा तो 2 डेसिमल प्लेस तक मैंने यहाँ पे फाइंड करके स्टॉप कर दिया है, ठीक है। तो मैक्सिमम आपको एग्जाम में भी कभी आएगा या कहीं पे भी आता है आपको, तो मैक्सिमम 3 डिजिट तक पूछेंगे, ओके। 3 डिजिट से आगे कभी नहीं पूछेंगे, कभी आता भी है तो आप कर लेना, ओके। मैक्सिमम 2 डिजिट या 3 डिजिट, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 डिजिट पे स्टॉप कर दिया है, ओके। सो वी विल से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ 150 विल बी इक्वल्स टू, ओके, नाउ इट इज़ equals to what, equals to 12.24, okay. Now do one homework, okay. What homework, okay, homework is that find the square of 12.24, okay. 12.24 का स्क्वायर फाइंड करना and see whether it is equal to 150 or not, okay. That is your homework number 1, okay. Of course there will be some other homework, okay. Now let us take another example. ये तो मैंने नॉर्मल लिया था एक होल नंबर्स टाइप. Let us take a decimal value. So now let's take 0.4221. Okay, I am taking a smaller value that is smaller than 1 value. Okay, you have to find the square root of smaller than 1. तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेयर में करते हैं. तो पेयर कैसे करते हैं, डेसिमल की बाद की वैल्यूज़ को हम स्टार्ट करते हैं राइट से, लेफ़्ट से. तो लेफ़्ट से स्टार्ट किया, राइट में गए, लेफ़्ट से गए, राइट में गए, ठीक है. तो सबसे फिर अगेन हम यूज़ करेंगे यहाँ पे लॉन्ग डिवीज़न मेथड. Okay, so first number is you have here is 0. So first you will write 0 here, 0 here, 0 here, 0 here. Okay, then you will get 0. Then you have this point that is decimal. तो आप यहाँ पे decimal लिखेंगे क्वेश्चन में. Then you will bring down this next pair which is 42. Okay, so you have 0 and this ones place. Okay, तो 0 1 वंस प्लेस पे आपके पास कुछ नहीं हो, टेंस प्लेस पे अगर 0 होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके पास में सिंगल डिजिट वैल्यू ही है. ओके, वंस प्लेस का ही नंबर है आपके पास में. ओके, सो यू कैन राइट दिस 0 एंड you may write this 0 or you may not be. Okay, it is not necessary to write this 0 at the tens place when you have already ones place one single digit. Okay.
Now you have to choose a square number or number which should be nearer to, after multiplication should be near to 42 or equal to 42. Okay, so that will be 6. Okay, 6 is a 36. So I will write 6 here. Okay, no problem. Perform the subtraction and perform addition here. So 6 plus 6 is 12. One's place will be blank. Perform subtraction, you will get 6 here, and then you will bring down this next pair 621. Okay, now 621 को आपको करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे choose some number. So I will choose here 4, because when you multiply this you will get a nearer number which will be equals to 496. Okay, now perform the subtraction. What you get here is 125 and 128. Okay, so what I get here is 0.64. Okay, so I have find the decimal up to, find the number up to 2 decimal place. Okay, 2 decimal place तक मैंने find कर लिया square root. Okay, so that's why I will stop here. Okay, so therefore we will write the square root of 0.421 will be equals to 0.64. Okay, so that is how we find the square root of less than 1 value. इसके बाद में अगर एक कंडीशन मैं आपको बताता हूँ, कभी यहाँ पे इफ़ समथिंग, सपोज अगर यहाँ पे 42 के बाद में कुछ नहीं होता, सिर्फ 42 ही होता, तो आप क्या करते हैं, देन व्हाट यू विल डू, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेस. तो अगर आपके पास में आगे डिजिट ही नहीं होगी डेसिमल के बाद में, तो आप क्या करेंगे, देन व्हाट यू विल डू हियर इज यू विल इंट्रोड्यूस ज़ीरोस एज पेयर. ओके, जैसे कि यहाँ पे आपने यहाँ किया था. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप ज़ीरो इंसर्ट करेंगे. ओके, सो दैट इज़ हाउ वी परफॉर्म द डिवीजन ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके, नाउ लेट्स डू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज 3.4. Okay, so let's come to question number 1 first. So in question number 1, what you have to do is you have to find the square root to the nearest whole number. Okay, whole number मतलब कि आपको डेसिमल का नहीं लिखना है. ठीक है, जैसा कि अभी आपको बताया मैंने, आपको नियरेस्ट वैल्यू फाइंड करना है एस्टिमेशन यूज़ करके. ओके, फर्स्ट वर्ड ही आप देखोगे तो आपको दिखेगा एस्टिमेट. सो इफ़ यू सी 410 हियर, सो 410 के आसपास जो स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो कौन कौन से है. सो फर्स्ट इज लेस देन जो होगा वो 400 होगा, and 400 is less than 410. Okay, I will write here. And next perfect square number which is greater than 410 is 441. Okay, now if you take the square root in this equation, what you get here is like this. Okay, so if you take the square root, what you get is here, for square root of 400 is 20. Square root of 410 will be written as it is, and square root of 441 is 21. Okay, but which value should be chosen here. Okay, so it depends on the difference. Okay, तो difference देखेंगे कौन से नंबर का difference आपको smaller है. 400 difference, 400 और 410 का difference मिलेगा आपको 10, और यहाँ इन दोनों का difference मिलेगा आपको 31. Okay, so of course the difference between in these two value is smaller than this two value, so therefore you will write that the square root of 410 will be equal to or not. Okay, it should not equal, it should be approximately equals to. Okay, इसको हम बोलते हैं approximately equal. Okay, हाँ. ओके, वन मोर थिंग, अभी हमने 150 का स्क्वायर रूट फाइंड किया. ओके, 150 का स्क्वायर रूट फाइंड किया, आपने क्या देखा 12.24. और अभी हमने जब एस्टिमेशन हम देख रहे थे, एस्टिमेशन में हमने देखा है तो आपने 150 का स्क्वायर रूट क्या लिखा था, नियरर टू 12. ओके, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 12. ओके, अगर आप इस 12.24 को एस्टिमेशन करोगे, ओके, तो इसका एस्टिमेशन जब करोगे तो आप इसको 12 ही लिखोगे. ओके, 12.24 को अगर आप लिखोगे तो 12.2 लिख सकते हो. ओके, 12.424 को 12 मत लिखिए. अगर आप नियरेस्ट 100 या नियरेस्ट 1000 ऐसे अगर आप कंपेयर इसको एस्टिमेशन करते हैं, ठीक है, तो आप इसको नियरेस्ट अगर टेंस में अगर इसको एस्टिमेशन करते हैं तो आप इसको 12.2 लिख सकते हैं. ओके, सो इफ़ यू सी 12.2 एंड 12 इज़ मच इक्वल. ओके, इजंट इट मच. ओके, ये जितना इक्वल भी नहीं है बट नियर टू इक्वल.
इसलिए हमने यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन यूज़ किया, एंड दैट इज़ हाउ द एस्टिमेशन मेथड इज़ यूज़फुल। ओके, ये मेथड आपको वहाँ भी यूज़ आएगी जब आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको फाइंड करते नहीं आ रहा या फिर याद नहीं आ रहा, तो आप इस अप्रॉक्सीमेशन मेथड को यूज़ कर लेंगे, तो आपको याद आ जाएगा कि इसका ये जो स्क्वायर रूट अगर फाइंड कर रहे हैं हम, तो ये किसके नियर होगा। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल नाउ, let us do B part now. So B part you have 600, you have to find the square root of 600. So first of all we will write the perfect square number which will be smaller than 600 will be 576. Okay, 576 is smaller than 600, and another number which will be greater than 600 is 625. Now what you will do here is you will take the square root of 576, square root of 600, and square root of 625. That is, you are taking the square root in this equation. Okay, so if you find, now what you will do here is you will find the square root. Okay, so this is a perfect square number, so you will get a perfect square number, that is perfect square root. So you will have 24 here, you will 600 don't have square root of 600, that is why you are writing like this. Okay, and then you will get the square root of 625 as 25. Okay, now take the difference here. So you, if you take the difference here, you will get 24, and if you take difference here, you will get 25. Okay, so you see 24 and 25 is nearer value. Okay, so but you will take only that value nearer whose difference is smaller. Okay, तो smaller किसका difference है, 24 का है, 24 difference smaller है, that is 576. 576 is the square root of 24. Therefore what you will get here is the square root of 600 will be approximately equals to 24. Okay, that is how we do the estimation. Okay, so the remaining part of this question will be your homework. Now we will move to the next question, sorry. Okay, so first in this question what you have to do is you have to find the square root of each of the following up to 2 decimal place. Okay, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, आपको जब भी स्क्वायर रूट फाइंड करने के बोलेंगे तो आपको या तो 2 डेसिमल प्लेस के लिए बोलेंगे या फिर 3 डेसिमल प्लेस का बोलेंगे. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड द डेसिमल प्लेस अप टू 2 डेसिमल, you have to find the square root up to the 2 decimal place. Okay, so for what you have to do is you have to find the square root of 5. So let us do by long division method. So first you have unpaired number 5 which is nearer to the 4, that is the square of 2. So we will begin by writing 2 here. You get a remainder 2, and 2 plus 2 here is 4. Okay, so again you have a number or the remainder which is smaller than the divisor, therefore you will introduce a decimal here and that will give you the number of 0. Okay, so you will bring down the first pair. Now we can use 2 here, so 42 into 2 will give you 84. Of course you will write 2 here again, and you get a 16 here, and again you will bring down this next pair of 0. So 42 plus 2 is 44. Okay, now you have to choose a value here. Okay, so that will be 3. Okay, if you choose 3, you will get some around 1300. Okay, 1300, that means 1329. Okay, actual multiplication is 1329. So if you perform the sum or difference here, okay, तो यहाँ पे अपने लिया 3, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं हम 1, यहाँ पे होगा 7, यहाँ पे होगा 2. Okay, so 271, and here you will get 446 slash. Okay, now you already got 2 decimal place. Okay, so therefore we will stop here. Okay, because we don't need to further divide it. Okay, because you already got 2 decimal place. Up to 2 decimal place you have to find the square root up to 2 decimal place. Therefore we will write the square root of 5 will be equals to 2.23. Okay, okay, now let's do another part, B part, 72.86. Okay, so of course what you do here is first you will make pairs. तो 72 का अलग हो जाएगा और 0.86 जो होगा वो अलग होगा. ओके, so 72.86, so first pair is this,
ओके, सो 72 के नियर कौन सा है? 64. सो यू विल राइट 8 हियर. 8 8 just 64. Perform plus here, you will get 16. Perform subtraction here, you will get 8. Okay, now what you have to do is you have to choose number here, but it is smaller than the remainder. That is why you have to bring down the next pair. Okay, नेक्स्ट पेयर से पहले कि आपके पास में डेसिमल है, इसलिए यहाँ पे आप लगा दोगे डेसिमल. ओके, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पेयर ब्रिंग डाउन करोगे तो 86 मिल जाएगा आपको. ओके, नाउ यू हैव टू चूज़ अ वैल्यू. सो यू विल राइट हियर 5. तो आपको मिलेगा 825. ओके, नाउ यहाँ पे आप करेंगे, लिखेंगे 5. सो इफ़ यू सब्ट्रैक्ट दिस you will get 61. Okay, 61. So if you add you get 170. Okay, now you only got one decimal place. Okay, ये आपको जबकि 2 decimal place find करना है. Okay, so now what you will do, you already got decimal here, so that you can, so now you can introduce pair of zero. Okay, तो pair of zeros आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इनको नीचे ब्रिंग करेंगे. So you will choose a number here, so that will be 3. 3 3 is 9, 0 7 3 is 21, 2 will be 5. So what you will get here is you will get some 1 9 and you will get 10. तो यहाँ पे भी 9 991. ओके, यहाँ आपको मिलेगा 1706 and fill in the blanks. Okay, so you get 3 here. Okay, so therefore what you get here is, I will write here, what you get here is square root of 72.86 is equals to, okay, it is equals to 8.53. okay, so that is the answer of this question. Okay, I have some small space left, that is why I am writing like this. Okay, so the remaining part will be your homework. Okay, and of course by doing this, आपको पता है क्या है इसका मतलब ये है कि that we completed our chapter number 2. that means we end of that is the end of chapter number 3. okay, so of course this is the end for me, not end for you. Why? Because you have to submit your homework. Okay, and on Tuesday. Okay, so now I'm announcing the date for the test. That will be Tuesday. Okay, so Tuesday you will have your test of chapter number 3. Okay, chapter number 3 का आपको टेस्ट लेना है. Okay, और ट्यूसडे तक आपको जो भी डाउट्स है चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन ट्यूसडे से पहले. ओके, ट्यूसडे के दिन अगर आप फ़ोन लगा के पूछोगे सर ये नहीं आ रहा है तो मैं नहीं बताऊंगा. ओके, सो दैट इज़ फॉर all about our chapter number 3 and today's class. Okay, so thank you very much. Goodbye. And one more thing. Okay, sorry, one more thing, कि जो भी बच्चा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेगा, ओके, ऑफ कोर्स अच्छा परफॉर्म से मतलब ये है कि जो अच्छे मार्क्स लाएगा टेस्ट में. ओके, दैट इज़ ओनली टेस्ट, नॉट योर एग्ज़ाम. ठीक है, सिर्फ मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ. जो भी आपका जो ट्यूसडे को आपका टेस्ट होगा उसमें जो भी बच्चा अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट गिफ्ट करूँगा. ओके, चॉकलेट आपको जो भी पसंद हो आप मेरे को बताना, मैसेज कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो. आज सब जो भी अपना होमवर्क सेंड करेंगे साथ में मुझे अपनी चॉकलेट भी बताना कि कौन से चॉकलेट पसंद है. ठीक है, तो आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छा मार्क्स लेके आए तो मैं आपको चॉकलेट कॉरियर करूँगा. ओके, हाँ, कॉरियर करूँगा मैं, आपके घर पे पहुँच जाएगी. आपको घर पे भी नहीं आना है, स्कूल भी नहीं आना है, कहीं पे भी नहीं आना है. ठीक है, आपके घर पे पहुँच जाएगी चॉकलेट, वो होगी सिर्फ मेरी तरफ से. ओके, बिकॉज ऑफ ओनली द परफॉर्मेंस इन योर टेस्ट. ओके, ठीक है. सो थैंक यू वेरी मच. Goodbye and be prepared for the test. Bye bye.